Good afternoon, my dear student. I hope you all are fit and fine and you have enjoyed a lot your summer vacation. So it's time to start our EVS class. In our previous video, we have already started our chapter number 2, that is Migration and Relations. So in this video, we are going to revise our previous topics and we also start new topics. So let's start our today's EVS class. So, my dear student, let's start our chapter number 2, Migration and Relations. In this chapter, we are going to proceed our next topic. But we had already started this chapter and let's revise the previous topics which we had already learned in this chapter. So, let's start. What is the meaning of migration? So, migration is a way to move from one place to another in order to live and work. Now next is, what is the meaning of relation? So relations means the connection between two or more things. In this chapter we are going to read the relation between us and our family members. We had also learned about family tree. So what is a family tree? Family tree is a diagram that shows the relationship between different members of a family over a long period of time. Now in previous video we had also learned that people move from one place to another due to some reasons. What are that reasons? So these reasons are due to transferable jobs, due to study, and due to displacement. What is displacement? When people are forcibly shifted during partition, war, or construction of dam. So these are the reasons due to which people they have to migrate from one place to another. So let's start our next topic, that is difficulties faced after migration. यानी डिफ़िकल्टीज़ का मतलब होता है परेशानियाँ, यानी मिग्रेशन के बाद जब हम नए शहर में शिफ्ट होते हैं तो उस समय कौन सी परेशानियाँ होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, difficulties faced after migration. So let's start our topic, difficulties faced after migration. Pinu lived in a very big house in the village, but now he lives in a small rented house. So dear student, you know this very well that previously Pinu was living in a big house in a village, but now he lives in a small rented house. तो पहले पीनू गांव में बहुत ही बड़े घर में रहता था, उसकी फैमिली भी बहुत बड़ी थी. बट नाउ द कंडीशन चेंज्ड. ही इज़ लिविंग इन अ स्मॉल रेंटेड हाउस इन सिटी. अब वो एक छोटे से किराए के घर में शहर में रहता है. ही डज नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स टू प्ले विथ. और उसके पास शहर में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं जिनके साथ वो खेल सके. ही मिसेस हिज स्कूल, हिज कज़न एंड हिज बिग फैमिली. सो पीनू अपनी फैमिली को, अपने स्कूल को, अपने कजन्स को बहुत मिस करता है. His father has many problems in setting up his new business. They are finding it difficult to adjust to the climate of Delhi. और उसके फादर को भी नई जॉब ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुई और इट मीन्स नए जगह एडजस्ट करने में भी बहुत दिक्कत होती है. क्लाइमेट, इट मीन्स विलेज का जो क्लाइमेट होता है बहुत ही प्लीजेंट होता है, अच्छा होता है. बट दिल्ली इट इज़ अ क्राउडेड प्लेस, क्राउडेड सिटी. तो वहाँ का इन्वायरमेंट भी और क्लाइमेट भी बहुत ही डिफरेंट था, जिसमें पीनू की फैमिली को, उसके फादर को एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी. और आप लोग को पता ही है कि द सोर्स ऑफ इनकम व्हेन दे वर लिविंग इन विलेज वाज एग्रीकल्चर. बट नाउ इट इज़ वेरी हार्ड that agricultural income was not sufficient for such a large family. That's why Pinu's father shifted to Delhi from village. His uncle's family also lives nearby. So Pinu's
uncle family is also living in Delhi. His uncle is working in a bank. They meet quite often और वो लोग कभी कभी मिलते भी थे. They live in a separate house. His uncle's family living in a separate house. Pinu feels lonely and wants to have fun and recreation. So student, you know that Pinu feels lonely. Lonely means akelapan because he has no friends. So that's why he is feeling lonely and wants to have fun and recreation. So recreation means any activity that is done for fun and enjoyment. So Pinu wants in his life fun and enjoyment, but he was failed because he has no friend. And also the reason is that Pinus find that Delhi is overcrowded, means Delhi is too much polluted and populated city. So this is also one reason. Due to that, Pinu was unable to recreate himself. There are some other difficulties as well which displaced people face. Okay, so you have learned about the difficulties which arises due to migration, but beside that difficulties there are other difficulties also which displaced people face. यानी जिन डिफ़िकल्टीज़ के बारे में आपने ऊपर पढ़ा उनके अलावा भी ऐसी कई सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो लोगों के चेहरे की खुशी को डिस्प्लेस कर देती हैं, मतलब विच डिस्प्लेस्ड पीपल फेस, यानी लोग पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं उन परेशानियों की वजह से, और इतना दुखी हो जाते हैं कि वी कैन कैपेबल टू रीड द सिंबल ऑफ सैडनेस फ्रॉम देयर फेस. Displacement affects the happiness and health of people. Okay, so displacement क्या था? Do you remember? Displacement means when people are forcibly shifted during partition, war or construction of dam. So due to displacement, it means when people they displace from one place to another place, so it affect the happiness and health of people. So displacement की वजह से लोगों की हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है, उनका हेल्थ भी ख़राब हो जाता है, मतलब वो बीमार रहने लगते हैं. इट ऑल्सो इफ़ेक्ट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पीपल. और फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि उनके पास पैसा भी नहीं रहता है, क्योंकि इन सच अ कंडीशन इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू गेट जॉब ईजीली. तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह, इट मीन्स नए जगह पे आते हैं, तो हमें जॉब भी जल्दी नहीं मिलता है, जॉब भी ढूंढने में समय लगता है. सो ड्यू टू दैट आवर फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो इफेक्टेड. सो इट इज़ टाइम टू आंसर. सी दैट people migrate due to transferable job or due to natural calamities. So you have to fill this in your book. So along with me, just try to fill. Forcible shifting of people due to partition, war or construction is called displacement. Next, when people move from one place to another due to some reason, it is called migration. Next you see, let's do. So it is find a family that has migrated from a village and lives nearby, interview them, find out. Okay, so अगर ऐसा कोई फैमिली है आपके घर के आसपास, so please ask them. You just take an interview and find out their reason for migration. Reason means होता है कारण, किस रीज़न की वजह से वो लोग अपना घर छोड़ करके आपके शहर में या किसी आपके शहर में रहने के लिए आए हैं. देयर लाइफ इन विलेज, यानी पहले जब वो अपने घर पे यानी अपने गांव पे थे तो उनकी लाइफ कैसी थी. देयर लाइफ आफ्टर मिग्रेशन, और मिग्रेशन के बाद यानी अपना शहर छोड़ने के बाद उनकी लाइफ कैसी है. डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय देम एंड बेनिफिट्स दे नाउ हैव, तो क्या परेशानियां उन्होंने झेला
इस मिग्रेशन के वजह से, और अब उनके लाइफ में क्या बेनिफिट्स हैं, यानी क्या फ़ायदे हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज्ड फैमिली स्ट्रक्चर. सो वंस अगेन यू सी चेंज्ड फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि अब फैमिली का स्ट्रक्चर बदल चुका है. स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा. तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले के टाइम में जैसी फैमिली थी अब वैसी फैमिली नहीं है. पूरी तरह से फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो बदल चुका है. सो लेट्स सी दैट nowadays what kind of family we have. Family structure have changed drastically over the period of time. So family structure यानी फैमिली की जो बनावट है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है. ड्रेस्टिकली मीन्स अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, सीरियसली यानी बहुत ही तेज़ी से बदल चुकी है समय के साथ. इट मीन्स दैट एज द टाइम पासेस द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली ऑल्सो चेंज ड्रेस्टिकली, यानी जैसे जैसे समय बदल रहा है फैमिली का स्ट्रक्चर भी बदल चुका है, बहुत ही तेज़ी के साथ बदल चुका है. अर्लियर पीपल लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली. अर्लियर मीन्स पहले. सो इन ओल्डन डेज पीपल दे यूज टू लिव इन जॉइंट फैमिलीज. लोग बड़े परिवार में एक साथ मिल करके रहते थे. हाउएवर as the time passed by, people moved away from their families due to many reasons. तो जैसे जैसे समय बीत रहा है people moved away from their families. लोग अपने फैमिली से दूर होते जा रहे हैं. and reasons you know very well. For study, due to transferable job, and due to certain other reasons. This migration led to change in joint family structure into smaller family units. And it means that migration is a reason due to which big family is changes into the smaller one. तो मिग्रेशन की वजह से ही जो बड़ी फैमिली है वो स्मॉल फैमिली में चेंज हो गई है. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बड़ी फैमिलीज़ हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, और वो किस फॉर्म में बदल चुका है, वो स्मॉल फैमिली में चेंज हो चुका है. The love and respect for each other in the family, however, remains the same. Okay, so now respect and love, this is remains same even in nowadays also. तो हम चाहे अपनी फैमिली के साथ हों या फैमिली से दूर हों, but even we are respecting and loving them a lot. Example we have when there is any festival occasion or marriage ceremony, we all are assembled together for great fun and enjoyment. Even if some people from the family move to another place. मतलब ये कि हमारी फैमिली हमारे साथ है या फिर दूर है, लेकिन तभी भी चाहे वो दूर हो या पास हो, हम अपनी फैमिली से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम अपनी फैमिली के जब साथ रहते थे उस टाइम जब करते थे. दे रिमेन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन्स, इंटरनेट एक्सेट्रा. मतलब कि हम अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं अभी भी, या कनेक्टेड हैं थ्रू टेलीफोन्स और इंटरनेट के मीडियम से. तो हम अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, बिकॉज नाउअडेज वी हैव telephones, mobile phone and internet also. So by the mean of these things we connected through our family members. Now time to answer. State whether the following statement are true or false. Family structure has changed over the year. Yes, time के साथ साथ family का structure change हो रहा है. So it is true. Migration lead to smaller family unit. It is also true because bigger family is converted into the small one. This is also true. Family who migrate from one place to another do not remain connected to their families. No, it is false. We are connected to our family members through mobile phones and through internet also. So see that key terms migration and displacement.
their meaning is given here. You have to write this meaning in your EVS copy. This is your homework. So before writing question and answers, you have to write these key terms in your EVS copy. Now let practice. So see the exercises. Fill in the blanks. Pinus lived with his big family in a village. The forced shifting of people is called displacement. Pinu feels lonely in Delhi. Some people leave their country to live in another country. This is called immigration. Now, next see, match the members of Pinu's present family with relations. So, parent Ramesh and Jyoti, uncle Shyam, grandparents. So, grandparents match with Ram Krishna and Gayatri Devi. And next you see aunt Meera, sister Deepa, cousin Mika. So you have to match in your book and you have to complete your book. Now see that short answer type question, long answer type question and HOTS it means I am sending you in PDF form. From that PDF you have to complete that question and answers in your EVS copy. So your homework is that complete your chapter number 2 in your EVS copy. All these exercises you have to write in your EVS copy. So that's all for today's class. Next chapter we will start in our next class. Thanks for watching this video.